I'm Awais Ishtiyaq, founder of Rehbar-e-Taraqi, o-Kamal. This is the entrepreneurial age. More than 500 million persons worldwide either were actively involved in trying to set up a new venture or were owner-managers of a new businesses in 2010. Meaning of entrepreneur. The word entrepreneur is derived from the French word entreprendre. It means to undertake. Thus, entrepreneur is a person who undertakes the risk by starting a new enterprise. Entrepreneur is a person who sets up a business or an organization by taking a financial risk. With financial risk comes a chance to earn financial gain in terms of profit. Apart from financial gains, entrepreneurs are also motivated by factors like innovation, disruptions, making an impact. आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा शख्स है जो रिस्क बेयर करके मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाता है जो पूरे के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज कर देता है। उसके पास प्रोडक्शन के डिफरेंट वेज होते हैं, नित नए तरीके होते हैं। उसके पास रॉ मटेरियल जो है वो न्यू रॉ मटेरियल को यूज़ करता है या वो चीपर रॉ मटेरियल को यूज़ करके एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाता है। और इसके साथ साथ उसका जो अल्टीमेट गोल होता है वो ये होता है टू अर्न प्रॉफिट। Why become an entrepreneur? There are three primary reasons that people become entrepreneur and start their own firms. First one is desire to be their own boss. एंटरप्रेन्योर की ये कोशिश होती है कि वो 16 घंटे अपनी कंपनी में काम कर ले ताकि वो 8 घंटे किसी और की कंपनी में काम ना करे या करने से बच जाए। Second one is desire to pursue their own ideas. Entrepreneurs are driving revolution that is transforming and renewing economies worldwide. And at the last, financial rewards, which means to earn profit. Characteristics of a successful entrepreneur. However, to be a successful entrepreneur should possess following characteristics. Passion for the business. This passion stems from the entrepreneur's belief that the business will positively influence people's lives. जब तक आपके अंदर शौक या सच्चा जज्बा नहीं होगा कारोबार करने के हवाले से, तब तक आप कारोबार के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी बात ये कि आपकी ये सोच होनी चाहिए कि जो आपका जो कारोबार है उसका लोगों की ज़िंदगियों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। Second characteristics of a successful entrepreneur is product customer focus. An entrepreneur keen focus on a product and customer typically stems from the fact that most entrepreneurs are at heart crafts people. Tenacity despite failure. A defining characteristic for a successful entrepreneur is their ability to persevere through setbacks and failures. Execution intelligence. The ability to fashion a solid business idea into a viable business is a key characteristic of a successful entrepreneur. हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरल फर्म, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे इनोवेशन को। इनोवेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू विच इज सेंट्रल टू एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस। नाउअडेज आपने देखा है कि स्मॉल फर्म्स के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी इतने ही इनोवेटिव होते हैं जितने लार्ज फर्म्स के एम्प्लॉयज़ होते हैं। Job creation. We have seen that in last 2 decades, economic activities are moved towards smaller entrepreneurial firms. जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज आपकी कंट्री के अंदर होगी उतनी ही ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। जितनी ज़्यादा आपके पास प्रोडक्शन के कारखाने होंगे, छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होंगी, छोटी फर्म्स होंगी, उसमें क्या होगा कि जो जॉब की जो इनलार्जमेंट है, ये जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्या होंगी, वो बढ़ती जाएंगी। व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप? देखिए, एंटरप्रेन्योर के पास एक यूनिक और इनोवेटिव आइडिया होता है। अब इस यूनिक और इनोवेटिव आइडिया को एक प्रैक्टिकल शक्ल देनी होती है। इस इनोवेटिव और यूनिक आइडिया को प्रैक्टिकल शक्ल देने के लिए उसे एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप की डिफरेंट स्कॉलर्स ने डेफिनेशंस दी हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टीवनसन की डेफिनेशन को। According to Stevenson, entrepreneurship is the process by which individuals pursue opportunities without regard to resources they currently have. उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना
अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।